आते to the London Designer Outlet Mall in Wembley. It's next to the Wembley Stadium. आज कोई rugby match चल रहा है women का, but that doesn't stop me. So if you're new to this channel, do hit the subscribe button if you love shopping, roaming around, and if you are not new, so welcome back to my channel. And without any further ado, let's get started. तो हम आज आ चुके हैं लंदन डिज़ाइनर आउटलेट इन वेम्बली। बिस्टर विलेज देख लिया था, औकात से बाहर था, सो आई थॉट कि थोड़ा औकात से अंदर के ब्रांड्स ले लिए जाएं। लेट्स चेक इट आउट गाइस। आई वांट टू चेक पुलिस का स्टोर, बट गाइस लुक एट द फ्लावर थिंग गोइंग ऑन। Don't expect anything very hi-fi from here, like not Prada, Gucci, but there's police. I don't see that in India, I think. North Face है, Lylan Scott है, and I think ये सभी outlets का ऐसा setup. Vans. And guys, बारिश शुरू हो गई है तो Pret को तो आना ही था. That too soy, so that's my lipstick. Oh, मुझे New Balance भी try करना है. I like their white sneaker shoes. Converse. I think this floor is about just fitness and everything. I'm first going to check out all the floors and then आराम से shopping करूँगी. Adidas का store मुझे बहुत ही ज़्यादा sexy लग रहा है. Like really nice, and this and this thing is very creative. And guys, look what I found. अभी दिखाती हूँ something which is so close to my heart that I can't even tell you. I miss my baby. M&S outlet मैंने पढ़ा था, so since their trousers are very famous in India for women, I'm gonna try check those trousers for me here. This Tommy. Replay, this CK, and that's where I walked from. Oops, sorry. Of course, यहाँ पर you will see me posing in some time or on my thumbnail, but this is so cute. I know where to click, right there. Okay. Oh my god, I am in love with this lavender thing going on. Isn't it pretty guys? फ्रेग्रेंस शॉप से परफ्यूम लूँगी या फिर मैं आई थिंक मैं ड्यूटी फ्री से लूँगी, क्योंकि पैसा तो है नहीं है, तो इंडिया में लैंड करके दिल्ली ड्यूटी फ्री से ले लिया जाएगा. एक फ्लोर और है, वो भी देख लूँगी. यहाँ पर तो मेरे मतलब का कुछ नहीं है, खाना पकाने और बर्तन धोने से मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है. यार उस लड़की को देखो, किसी दिन मेरा भी इतना बड़ा होर्डिंग होगा तो अच्छा लगेगा. किसी को अगर होर्डिंग बेचना हो तो बता देना, हर जगह इंडियंस मिल जाएंगे. क्योंकि आई टोल्ड यू बिफोर, मुझे बहुत पसंद है जब मैं इंडियंस को देखती हूँ. नॉट जस्ट इंडियंस, मेनली एशियंस. आई डोंट नो व्हाई. ऐसे लग रहा है किसी की शादी है और फूल लगा दिया. हमारे यहाँ तो आजकल शादी के डेकोर में ऐसे फूल लगने लग गया है. कितने बुढ़े बुढ़े अंकल लोग भी इंजॉय करते हैं अपना लाइफ यहाँ.
अंकल बोल के गई है इस स्टोर में मैं आऊँगी गाइस। सो ये यहाँ पर सुट्टा एरिया था गाइस, एंड देयर सिने वर्ल्ड जो मैं कभी नहीं देखूँगी, नॉट बिकॉज आई डोंट लाइक इट बट बिकॉज मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ ना एक मूवी, 2 movies I guess, one Bollywood and one Insidious which I hate, but my sister loves it, तो for sister love देख लिया। लेटेस्ट मूवी तो मैंने वही देखा है करण जौहर का, जिसका मुझे नाम भी याद। सो मॉल के साथ में ही वेम्बली स्टेडियम है, आज विमेंस रग्बी मैच है। सो वन टीम इज़ लेपर्ड्स बिकॉज पीपल आर ड्रेस्ड अप एज लेपर्ड्स, आई डोंट नो द अदर टीम्स नेम बट या I mean, I read, but I forgot. And guys, see the culture, man. अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं. And see, this is life. मस्त बियर सुड़का जा रहा है. And enjoying family time. That's why I love this culture. Up, we can get back to shopping. ग्राउंड फ्लोर पे ये है, आई एम ग्लैड मुझे ये दिख गया। नाउ आई कैन डिसाइड, लेवल 2 लेवल 3 पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आई नो लेवल 1 एंड लेवल ग्राउंड पर लगाऊंगी। सो गाइज द डैमेज हैज़ बीन डन, मैं दिखा दूंगी मैंने क्या लिया। दे डिड नॉट लेट मी फिल्म इनसाइड बट अ बिग होल इन द पॉकेट आई वुड से। लेट्स सी वेयर डू आई गो नेक्स्ट। I'm gonna pick this, insert कर दूंगी how it looks on me, but we're getting this guys. It's a dress and I like these pants but अभी नहीं ले रही हूँ मैं pants. By the way, if you didn't realize, I'm in the Adidas Originals store. It's not that expensive though, but फिर आप पैसा ख़त्म हो गया अपना। Puppies. New Balance it is. Oh my god, I love this sports bra. And किसी दिन तो मेरे भी abs आ जाएंगे guys. I'm here to check out shoes though. Let's see. So this is kids. This is women's. ये पिंक जूता मेरे अंडर आर्मर जैसा है। 50% ऑफ। पफर जैकेट तो नहीं लेना है। $44. Oh, I actually need this gift. 1500 रुपये का नहीं लेंगे हम। People doing touch up. Oh, I love this. Like I really like this color.
15 का है. But what is this? It's a normal tee, like a crop, which doesn't even have a Nike logo. Oh, it has. Sorry guys. But महंगा है, 1500 रुपये का नहीं ले रहे हैं हम. Always convert when you're on vacation just to compare. थोड़ा थोड़ा करके खरीदती हूँ, बट खरीद लेती हूँ guys. This blush is bomb and this is my hand after sampling. I love it, how colorful this is. Oh shit. Hello. Would you like a bag? No, I'm good. So I did not go for a lot of luxury, but a bit of it. I picked this. The brand name is Giger. So I'm eating chicken biryani bowl with chicken wings and drink free आ रहा था, तो I'll take it home because I don't drink any drinks with food. तो I'm done with my shopping. आपको घर जाके दिखाऊंगी और मे बी इन वन ब्लॉग कि लंदन से मैंने क्या क्या लिया. थोड़ा सा इसमें है एंड इसके अंदर भी काफ़ी बैग्स हैं. सो आई एंजॉयड माई डे. आई लाइक दिस मॉल. ओवरऑल रिव्यू ये है कि दिस मॉल इज़ अ बिट अफोर्डेबल, नॉट लाइक द बिस्टर विलेज. वील सी द कंपैरिजन सून. If you like this video, do give it a thumbs up, share it with your friends and don't forget to subscribe. Bye for now.